It was 2nd March 2019 and very early in the morning, सुबह सुबह 4:30 पे हम लोग घर से निकल गए थे so that by 5:36 we will reach Marine Drive और प्लान ये था कि हम लोग जितना जल्दी हो सके पहुंच जाएं so that सुबह सुबह क्राउड आने से पहले अर्ली मॉर्निंग जस्ट सनराइज होगा एंड वी विल स्टार्ट द शूट एंड हम लोग मरीन ड्राइव पहुँचे और मैंने सीन एक्सप्लेन किया रेचल को एंड आर्या के साथ शॉट वगैरह डिस्कस किया और उस टाइम पे अंकुश भी था हमारे साथ एंड हम लोगों ने बाकी सब प्लानिंग कर ली। जैसे ही परफेक्ट लाइटिंग हुई एंड एवरीथिंग हमने शूट स्टार्ट कर दिया। Driving north to the setting sun, I heard our song and Coldplay's on. You sing it loud, so off key. I laughed at you and you smiled at me. And I was waiting for the day when you'd come back and say you wanted to. I dreamed the white dress, beach house, and kiss. I guess forever was a lie. I know, you all must be wondering कि रेचल इतनी अलग क्यों लग रही है। So the thing is कि आर्या रेचल का कैरेक्टर प्ले नहीं कर रही थी when we started shooting for a summer story. आसमां से जो है आया तू सितारा वही, यार तेरे बिन एक पल भी अब गवारा नहीं। आसमां से जो है आया तू सितारा वही, यार तेरे बिन एक पल भी अब गवारा नहीं। मेरा ख्वाब है तू ही जो बेनकाब है, यारी तेरी तुझी पे मेरी जिंदगी हुई इस कदर है फिदा। गुमशुदा हुआ मैं पहली दफा गुमशुदा। So it all started when I left my job and the day I left my job मैं सबसे पहले मरीन ड्राइव पर गया था एंड मैं वहाँ जाके बैठ गया था थोड़ी देर एंड इट वाज लाइक इवनिंग एंड वहाँ पे मैं बैठा था जब मुझे आइडिया आया ऑफ मेकिंग अ समर स्टोरी एंड दैट इज़ द रीज़न कि जब समर स्टोरी का फर्स्ट एपिसोड जब स्टार्ट होता है तो समर कैरेक्टर अपना जॉब छोड़ने के बाद जाता है और मरीन ड्राइव पे बैठ जाता है एंड दैट्स व्हेन द होल स्टोरी स्टार्ट्स। सो इनिशियली व्हेन आई गॉट द आइडिया ऑफ अ समर स्टोरी तब वो एक कहानी थी अबाउट दिस इंडियन अमेरिकन गर्ल जो फर्स्ट टाइम इंडिया आती है एंड द एक्सपीरियंस okay what all she see and everything. So originally it was just the story about Rachel. That was the original idea. So my idea was that Rachel will visit India and somehow she will meet this character called Summer and he will help her in the most realistic way and there was no plan of adding a whole friendship angle and everything. और जब मैं लिख रहा था तब मुझे realize हुआ कि वो friendship वाला angle is very important and that's when I started writing about Varun and Raghav and I think that was the best decision ever. Paurush, इधर photo. The good quality of Varun is he's very childish, like no, I always believe that no matter what,
no matter how mature you become, no matter how like आपकी कितनी भी उम्र हो, but you should always keep that childhoodness inside you alive. And that's what I liked about Varun, क्योंकि वरुण में बचपना बहुत था, and the thing is he's a very jovial person, he laughs and he laughs at anything, and मतलब अगर मजे भी करता है तो खुल के मजे करता है, मतलब he's that kind of guy. देखा भाई, सुना भाई. रुक हाँ Sleep with her. But what I don't like about his character is, he is he's very naive. मतलब he's like, simply put, he's very naive, and उसको like वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है लोगों से. उसके दोस्त उसको कुछ बोलेंगे वो विश्वास नहीं करेगा, वो उसको उस पर कम विश्वास होता है. लेकिन अगर कोई बाहर वाला इंसान कोई उल्टी सीधी बातें कर देगा उसके दोस्तों के बारे में, तो वो उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. एंड आई टेल यू वन मोर थिंग अबाउट दिस, वो कैरेक्टर का जो ट्रेट है वो एक्चुअली मेरी रियल लाइफ से लिया गया है. जो वरुण के फ्लॉज हैं वो मेरे में भी फ्लॉज हैं. अभी है नहीं, आई मीन थे. तेरा टाइपिंग स्टाइल तू अपने हिसाब से ले लेना. Some time out of your private life and work on it. चालू रहना. मैं इसकी तरह देखूं तब तू हम दोनों की तरह वैसे देखना, फिर पूछना व्हाट. ठीक है. हाँ ठीक है सर. तो जॉब नहीं छोड़ना चाहिए. छोड़ा नहीं अभी. अच्छा तू ऐसा बोल अच्छा हाँ कि देख ले, बट मुझे अभी भी लगता है तुझे थोड़ा और सोचना चाहिए. ठीक है. I mean, good quality about Raghav was so I think he was the mature, like he was the most mature person out of all of them. That was one good thing. And secondly, no matter how serious his life was, he had that side to him that you can see in certain instances, that wo masti wala, you can see that this guy can be funny, he can be really fun too. So there are certain instances where you see that, and I like those glimpses of the fun side of Raghav. ये चला है ना बैठ भी गया. Okay. Action. It was a perfect Saturday. नो राइट. यूजुअली लोग वीकेंड्स पर यही करते हैं. वेलकम टू नॉर्मल लाइफ. So yes, that is one thing I love about my character, and one thing I didn't like about my character, I mean वो तो आप जानते ही हैं, काश उसने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस किया होता. But again, I think that is the character, so you can't do anything about it. But don't get inspired by him. देख ले, मुझे अभी लगता है तुझे थोड़ा और सोचना चाहिए. ठीक है. रोलिंग हो रहा है. जी. गाइस, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ. गुड डिसीजन. इमीडिएटली नहीं बोल रहे हैं. इमीडिएटली नहीं बोल रहा, तो अपने काम में लग रहे हो. तेरे को उसका लैपटॉप का क्लू लेना मेरा है. क्यों बोल. ठीक है. करो वापस, मजाक कर. पौरुष, तेरे डायलॉग से लेना. So हम सब एक्चुअली में फ्रेंड्स है कॉलेज टाइम से, एंड व्हेन आई फाइनली रोट द स्क्रिप्ट आई called everyone and I was like, let's make this. So मैं, पौरुष and रोहित, we used to live together, and हमारे घर के पास में दूसरे फ्लैट में शुभ्रमा and आर्या भी रहते थे. So आर्या was originally supposed to be the cinematographer of the series, and me, रोहित and पौरुष, we were playing the characters. तुझे रेचल के बाद ओह तभी वो एक्सेंट. हाँ ब्रो, मुझे भी कर दे, पहले ही बोल दे तू. दिमाग ब्रो वहीं पे मिली मुझे. क्या? अरे यार शुरू से करते हैं वो. नहीं ठीक है, करते हो जाएगा. So all of this was like after 1 year of college, so everyone was working, but I left my job, so I had to plan the shoot in a way that
जब सब फ्री हो तब हम लोग शूट करें. सो हमने प्लान किया था कि हम लोग वीकेंड्स पे शूट किया करेंगे. शोपुरिमा का शेड्यूल आई रिमेंबर बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता था, तो इसलिए आई वाज लाइक कि मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा. सो दैट्स वाई इन सीजन 1 यू विल सी कि उसका बहुत लिमिटेड अपीयरेंस है, एंड मोस्टली व्हेन देयर आर नो डायलॉग्स, देयर आर जस्ट मोंटाज और सॉन्ग्स, तब वो है पूरे टाइम. सो फाइनली जब स्क्रिप्ट रेडी हो गई थी एंड आई टोल्ड एवरीवन दैट यू नो वी आर गोना मेक दिस, सो वी स्टार्टेड डिवाइडिंग द वर्क. सो आर्या वाज गोइंग टू बी द सिनेमाटोग्राफर एंड अंकुश उस टाइम पे था जो कि ही वॉज हेल्पिंग मी विद द डायरेक्शन. कास्टिंग द फ्रेंड्स वॉज नॉट डिफिकल्ट बिकॉज मैं उन्हीं लोगों के साथ रह रहा था, रोहित और पौरुष के साथ. आई वॉज लाइक यू गाइज आर गोइंग टू डू इट. मैंने बस उनको कन्विंस कर लिया था कि बहुत मजा आएगा यू नो, एंड तुम लोग का शेड्यूल बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, डोंट वेरी. एंड कास्टिंग रेचल वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज रेचल एक ऐसा कैरेक्टर था जिसमें हमें कन्विंस करना था ऑडियंस को कि एक्चुअली शी इज़ फ्रॉम यू नो US एंड शी इज़ यू नो लाइक एन इंडियन अमेरिकन गर्ल. तो वो काफ़ी मुश्किल था. एंड दैट्स व्हेन वी अप्रोच्ड वन ऑफ आवर कॉलेज friend Leo. So her name is like her nickname is Leo, her name is Mamta. So we approached her and I told her the entire script and she was like yes, let's do it. I'm in a very good mood right now and we are just roaming the mall. I'm waiting for my hero to be here and he's just right behind me. I just can't stop laughing. I'm just waiting that he just comes over and take a picture with him. I'm so excited. Shivam Jamini! I just spotted him in the Oberoi Mall. Yeah. See guys, this is Shivam Jamini. Tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I have to find you. Tell you I need you. So because ये एक ज़ीरो बजट प्रोजेक्ट था, so eventually प्लानिंग बहुत ज़्यादा लगती है, एंड स्पेशली फॉर द आउटडोर शूट. एंड इनफैक्ट जो एपिसोड 1 है उसी में काफ़ी ज़्यादा आउटडोर शूट था. लाइक मरीन ड्राइव पे शूट था, देन देयर वाज अ होल रेलवे स्टेशन का शूट, उसके पहले ट्रेन के अंदर का पूरा सीन था. एंड हम लोग DJI Osmo Pocket से सारे आउटडोर शूट कर रहे थे बिकॉज वो काफ़ी छोटा सा कैमरा है एंड उसमें आप यू नो ईजिली आउटडोर शूट कर सकते हो, प्लस उसमें गिम्बल भी है. सो हमने सारी प्लानिंग कर ली थी, कौन कब कहाँ पे खड़ा होके कौन सा शॉट लेगा एंड किस तरीके से हम लोग करेंगे शूट. एंड फाइनली हम लोग मरीन ड्राइव गए. 2 मार्च वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग घर से निकल गए थे एंड बाय द टाइम इट वाज 6 हम लोग वहाँ पहुँच गए थे मरीन ड्राइव पे. सारे सीन डिस्कस करे एंड वी स्टार्टेड शूटिंग. पूरा शूट किया हमने, इवन ट्रेन वाला शॉट लिया, सब कुछ हुआ एंड वी केम बैक होम. वी finished the rest of the shoot the next day. I've been waiting for my boat to fly. I'm sailing west into the waves. तो ये वीकेंड पे शूट चल रहा था एंड आफ्टर दैट वीक स्टार्ट हो गया एंड सब अपने अपने काम में बिजी हो गए. और जैसे ही फिर नेक्स्ट वीक आया हम लोगों को वापस से शूट स्टार्ट करना था एंड दैट्स व्हेन आई गॉट अ टेक्स्ट फ्रॉम लियो दैट वो शूट नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, वो शूट नहीं कर पाएगी अब. एंड वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था एंड वी ऑल्सो अंडरस्टूड बिकॉज यू नो दिस वॉज लाइक अ ज़ीरो बजट प्रोजेक्ट. एंड द ओनली थिंग दैट मेड अस सैड वॉज कि हमने फर्स्ट एपिसोड शूट कर लिया था एंड इट वॉज यू नो रियली डिफिकल्ट एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. सो there was a time when we thought you know let's just cancel it because when you make something you know like zero budget या कुछ ऐसा बनाते हो जिसका आपको पता नहीं कि वो चीज़ कहाँ जाएगी, तब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है टू स्टे मोटिवेटेड कि आप मोटिवेटेड रहो कि आपको ये चीज़ करनी है. सो हुआ ये कि लियो का कैंसिल हो गया था कि वो अब शूट पे नहीं आ पाएगी. वी वर ऑल डिस्कसिंग कि अब कैसे कास्टिंग करनी है, शुड वी यू नो इन्फॉर्म लाइक लुक फॉर सम पीपल इन कॉलेज और वॉट. एंड आई रिमेंबर वेरी क्लियरली वी वर ऑल सिटिंग एट होम एंड वी वर डिस्कसिंग कि व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप. एंड I looked at Arya and I was like, can you play Rachel? Because she has also worked in casting as a casting associate and everything, and she has a very good idea about acting. Like she knows, like she can act. So I asked her, will you? और आर्या ने बोला कि हाँ ठीक है, I'll do it. But आवाज़ का क्या? Like how will we do the voice? And I told her कि you know what, you act and जो आवाज़ है वो उसके लिए हम कोई actual Indian American girl को contact करते हैं and we will ask her to dub your voice ताकि वो एक authenticity जो है वो आएगी आवाज़ में and no one can question कि you know like no the accent because that will be authentic. And she said yes, let's do it. So that day only I remember I told her to quickly prepare any random scene and after half an hour or 1 hour we will shoot the video.
एंड उसमें उसको लिपसिंग करना होगा बेसिकली उस सीन का, और फिर जो भी वो सीन इनैक्ट कर रही है उसकी ऑडियो हम उसके वीडियो के साथ मैच करके एक बार देखेंगे कि वो कैसी लग रही है, कन्विंसिंग है कि नहीं. एंड वी डिड दैट एंड वो इतना ज़्यादा कन्विंसिंग लगा कि वी वर लाइक लेट्स डू इट, यू विल बी द रेचल नाउ. Look, Mona did some terrible things. She did some of them to me, and I'm her best friend. I don't know how she could, but you know, we were so close to becoming those girls who would sit at a table and guard purses while the hot girls were on the floor dancing. But Mona made sure we didn't disappear. And I owe her for that. And that's how Arya became Rachel, and I think that was another best decision ever. Hey, do you know this place? Oh, I'm a photographer. Why are you so against love? Were you madly in love once? Oh, what surprise. रेचल को हमेशा पता रहता है कि क्या मैटर करता है और क्या नहीं करना चाहिए, यू नो, कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीज़ें है जो उतनी सीरियसली नहीं लेनी चाहिए. हाँ, बट वो सेंसिटिव भी बहुत है. जैसे जब उसको डिसलाइक्स मिलते हैं उसके वीडियो पे, आई थिंक जब वो सेंसिटिव होती है तो समर एंटर कर देता है एंड ही बिकम्स हर रेचल, यू नो, ही इज़ द वन हु सेव्स हर देन. सो या सो हमें ये मालूम था कि किसी को ढूंढना फॉर डबिंग इट विल टेक सम टाइम, एंड वी स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग पीपल और म्यूचुअल फ्रेंड्स हु आर लिविंग इन USA कि आप बताओ अगर किसी को जानते हो. एंड वी न्यू दैट इट विल टेक सम टाइम, एंड हमने साइड बाय साइड शूट स्टार्ट कर दिया था. एंड आई टोल्ड आर्या कि जो भी लाइक पॉसिबल एक्सीडेंट हो सकता है वो उसमें बात करे, सो दैट वेन एवर द पर्सन हु विल बी डबिंग हैज़ टू डब, वो उनको समझ आ जाए कि अच्छा उनको इस तरीके से लिपसिंग मैच करना है. मैं और आर्या यहाँ पे अभी CCD पे बैठे हैं एंड वी आर शूटिंग फॉर अ समर स्टोरी. एंड आई थिंक ये वीडियो आप लोग तब देखो जब वो ऑलरेडी आउट हो चुकी होगी वेब सीरीज़. एंड सो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो कैफ़े वाला सीक्वेंस है हमने कैसे शूट किया. इस पूरे सीक्वेंस में एक्चुअल में सिर्फ मैं और आर्या ही प्रेजेंट है, देख सकते हो आप. एंड आई केप्ट इट लाइक दिस. And she said her dialogues, then she kept it on that side, recorded my dialogues, and we actually kept it on some other tables also to, you know, take a long shot. Also Ankush, who was helping me with the direction, he was also living with us that time, but he had to go back to his town for some reason, and that's when he also got out of the project. सो इवेंचुअली हम सिर्फ 5 लोग बचे थे, मैं, रोहित, पौरुष, आर्या एंड शुभुरिमा. एंड हम 5 लोग ही वेब सीरीज़ के अंदर भी थे और हम शूट भी कर रहे थे. सो वी वर लाइक ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल डू इट समहाउ, वी विल मेक इट हैपन. सो द प्लान वॉज दैट व्हेन आई वाज डायरेक्टिंग एंड आर्या इज़ नॉट इन द सीन, शी इज़ शूटिंग, लाइक आर्या इज़ द सिनेमाटोग्राफर, बट व्हेन आर्या जब सीन में है सो आई विल हैंडल द कैमरा. एंड जब हम दोनों यू नो वी आर ऑन स्क्रीन, तब आइदर पौरुष, रोहित, किसी को भी हम मतलब शॉर्ट साइड करके दे देते कि यू नो यू शूट. एंड ऐसे करते करते समहाउ वी फिगर्ड आउट सम और द अदर वेज जिससे हम लोग शूट कर लें एंड पता भी ना चले कि हम ही लोग शूट कर रहे हैं, बट इवेंचुअली शूट भी हो जाए. रेडी पौरुष? हाँ, एक्शन. श्रेया से ठीक है. तो श्रेया के जाने ओके, फोकस हट रहा है क्या? नहीं कब आएंगे? एक दो दिन में चले जाएगी. कब आएगी? कब जाएगा? एक दो दिन में. देखा भाई, किसी को भी घर ले आया. आई नो राइट. सुना भाई, किसी को भी हल्ला तो लाउड मत बोल, धीरे बात कर क्योंकि वो सुन लेगी. रेचल अंदर है, रेचल यहीं है. सुना भाई, किसी को भी घर ले आया, ऐसे बोल. सुना भाई. सो रेचल की कास्टिंग तो अब आपको पता है कि कैसे हुई थी. एंड अबाउट रोहित एंड पौरुष, आई थिंक उन दोनों के अलावा वो कैरेक्टर और किसी पे अच्छा लगता ही नहीं. लाइक दे वर लाइक परफेक्ट, बिकॉज वो कैरेक्टर्स लिखते टाइम मैंने रोहित और पौरुष से ही इतना इंस्पिरेशन लिया था कि वो कैरेक्टर्स कोई और प्ले कर ही नहीं सकते थे, वो उन पे ही एकदम परफेक्ट जाते थे.
And I remember when I told them the story and they were like, yeah, let's do it. भूख लग रही है यार, बहुत भूख लग रही है यार ढोकला आधा खा के रख दूं क्या? यार, सजा देना ऊपर। ज्यादा लगे। अबे लंच भी मंगा लेते हैं थोड़ा। एंड जो ईशा का कैरेक्टर है, आई ऑलवेज न्यू कि मुझे उसमें और भी ज़्यादा चीज़ें डालनी है, और भी ज़्यादा कंटेंट, बट बिकॉज जब हम समर स्टोरी बना रहे थे तब उस टाइम वो ऑलरेडी काफ़ी हेक्टिक उसका शेड्यूल था, एंड प्लस आई रियली थॉट कि यार लाइक इसको मैं ज़्यादा ऑलरेडी इतनी बिजी और ज़्यादा डिस्टर्ब ना करूँ. सो ऑल द डायलॉग्स पार्ट ऑफ हर आई यूज्ड टू जस्ट लाइक कि ओके लेट्स कुछ इस तरीके से करते थे कि उसका सीन भी आ जाए बट उसको ज़्यादा डायलॉग्स वगैरह पे फोकस ना करना पड़े, ताकि वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो. आई न्यू कि अगर इसका सीज़न 2 बना तो डेफिनेटली ईशा कैरेक्टर को मैं और आगे ले जाऊंगा, एंड आई विल कन्विंस शुभरेमा कि यार जॉब अपनी जगह बट प्लीज़ तू एक्ट कर ले. I remember Shivam introducing the idea of a winter story one fine afternoon when we went to the Mami Film Festival. It was a really exciting afternoon. He just sat and he was talking about all the little character detailing and what he had in mind after a summer story. The characters will have more layers, etc. All of us were really pumped up, and that is when he introduced the whole idea of like projecting Isha as another like prominent character in the show. Like I was really excited because she has a lot of layers, and the way like he described whatever he had in mind for her and Raghav after the little cameo that I had in A Summer Story. I felt that his thought development and his thought process was really rich, and so yeah, Winter Story took birth one fine afternoon during the Mami Film Festival. सो सीज़न 1 में ही काफ़ी सारे आउटडोर शूट ऐसे भी थे जो मोन्टाज के पार्ट थे या फिर किसी सॉन्ग के पार्ट थे, जिसमें हम लोग बाहर जा रहे हैं और लाइक पूरा डे स्पेंड कर रहे हैं, मॉल जा रहे हैं या बीच जा रहे हैं. सो उस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था शूट करने में, बिकॉज आइडिया ये था कि हम लोग एक्चुअली में घूमने जा रहे हैं, हम पाँचों घूमने जा रहे हैं, एक के बाद एक कोई भी कैमरा पकड़ लेगा, एंड वी विल जस्ट कैप्चर ऑल दोज मोमेंट्स, एंड उसी को हम वेब सीरीज में दिखाएंगे एज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी. बहुत खुशियों के मोमेंट्स हैं, एंड मतलब हर चीज, मतलब वी लिटरली हम लोग हर चीज हर जगह जाते थे ना. वी यूज्ड टू मेक श्योर दैट हमारी जो सीरीज है उसका कोई ना कोई सीन तो शूट हो ही जाए. चाहे अगर हम लोग किसी टपरी पे भी जाएंगे ना, लाइक चाय पीने या समोसा खाने, वी विल मेक श्योर कि मतलब यार एक सीन चलो इसका ले लेते, यार एक सीन चलो उसका ले लेते. इवन इफ यू लाइक आई स्टिल रिमेंबर लाइक हम लोग लाइक डिनर करने जाते थे या हम लोग लंच करने जाते थे कोई बाहर लाइक रेस्टोरेंट में, एंड देन शिवम यूज्ड टू बी लाइक अरे ब्रो हम लोग ये एक बार शूट कर लेते हैं, पता है ये यहाँ से एंगल बहुत अच्छा आएगा, पता है ये टेबल बहुत सही लग रहा है यार, हम लोग इस पे एक बार कर लेते हैं यार. आई रिमेंबर हम लोग एक बार गेमिंग जोन गए थे एंड वहाँ डैशिंग कार चला रहे थे. सो इन दैट सीन हम पाँचों दिख रहे हैं, पाँचों. मैंने अपना मोबाइल लिया और जो वहाँ पे लाइक ऑपरेटर भैया थे, आई जस्ट गेव इट टू हिम एंड आई एम लाइक कैन यू रिकॉर्ड अ वीडियो, एंड उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल. दैट सीन इज सो रियल बिकॉज उस टाइम पे वो जो डैशिंग कार थी कुछ अलग टाइप की थी, उसमें स्टीयरिंग नहीं था एंड इट हैड लाइक जॉयस्टिक काइंड ऑफ अ थिंग, एंड हम लोग के सारे रिएक्शंस एकदम रियल थे. वी वर एक्चुअली फिगरिंग इट आउट. उस टाइम पे वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ फन, एंड वो चीज़ कैमरे में कैप्चर हुई, एंड वो हमने वेब सीरीज में भी यूज करी एज अ पार्ट ऑफ अ आउटिंग सीन. It's already rolling. As soon as I say rolling, you go out and come back. I won't say action, ठीक है? Because आवाज है. तू आना और जैसे ही तू आएगा सबसे पहले तू लॉक करेगा. लाइट इमेजिन कर तू दबा रहा है. It's already ऐसा pretend कर. सो हम लोग का शूट चालू था साइड बाय साइड, हर वीकेंड होता रहता था, एंड हम लोग की सर्च चालू थी फॉर समवन जो डब कर दे हमारे लिए रेचल कैरेक्टर को, एंड थ्रू आवर म्यूचुअल फ्रेंड हमारी पहचान हुई रमशा से, एंड आई थिंक दैट वाज अनदर बेस्ट डिसीजन एवर. एंड हमने रमशा से बात करी, हमने उसको बताया पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, एंड शी सेड येस आई विल डब इट. एंड जब हमारा पूरा शूट हो गया था समर स्टोरी का, एंड व्हेन वी स्टार्टेड द पोस्ट प्रोडक्शन, आई रिमेंबर मैं एडिट करता था. फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट एपिसोड एडिट किया, उसका एक सीन मैं लेता था रेचल का, मैं उसको भेजता था रमशा को, एंड वो वहाँ से एक एक डायलॉग की ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजती थी अपने मोबाइल से, एंड मैं यहाँ पे उसे सिंक करता था उसके साथ, सीन के साथ. एंड अगर कोई डायलॉग सिंक नहीं हो रहा है सही से, मैं उसे वापस भेजता था, वो उस डायलॉग को वापस भेजती थी, एंड ऐसे करके हमने पूरी सीरीज़ की डबिंग करी. एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू रमशा कि उसने हमें इतना ज़्यादा हेल्प किया. लाइक वो अभी भी कर रही है फॉर विंटर स्टोरी ऑल्सो. शी
did the whole dubbing. So really blessed to have her. Like Ramsha is seriously one of those people जिसके बिना ये series कभी नहीं बन पाती. I'm not waiting for the day when you come back and say you want me to. Guess forever was goodbye. And I remember जून में मैंने कुछ auditions देना start किए थे and that was the time when I got selected for Mosagallu also and Mosagallu का shoot was starting from August. So मैं हैदराबाद में था, पूरा shoot वूट हो गया था मूवी का done and I was back in Mumbai. So मुझे याद है कि जैसे ही सारे episodes upload हो गए थे YouTube पे, मैंने उसके बाद ही तुरंत season 2 की script लिखना शुरू कर दी. We were having this Jio Mami Film Festival, so तो मैं आर्य और पौरुष जाते थे एंड वीकेंड पे रोहित और शुभ्रमा ने भी हमें ज्वाइन किया था. so one day, like all of us were waiting for the premiere of a movie. बहुत बड़ी वेटिंग लाइन थी एंड हम लोग वहीं ज़मीन पे बैठे हुए थे थिएटर के बाहर, हम पाँचों. एंड मैं और आर्या उठ के गए थे कुछ खरीदने के लिए, लाइक आई थिंक कोल्ड कॉफ़ी और समथिंग. एंड एक लड़की आई हमारे पास एंड शी वाज लाइक कि यू आर समर राइट, लाइक आई हैव सीन योर वेब सीरीज रेचल राइट. एंड वी वर लाइक वाओ, लाइक एंड वी गॉट वेरी हैप्पी. एंड हमने उसको बोला कि हाँ वहाँ पे राघव, वरुण और ईशा सब बैठे हुए हैं. एंड देन शी सेड हाई टू एवरीवन एंड वी ऑल गॉट वेरी हैप्पी. हम लोग को बहुत अच्छा लगा. And then Shivam was like, यार I have these ideas, मेरे पास काफ़ी सारे concepts हैं and like I just have to stitch them together. So we need to do a season 2 and बहुत अच्छा होगा और they will love it. And so I think we need to start discussing and you know करना चाहिए हमको. So we were definitely in for it immediately. ज़्यादा conflicts दिखाना है इस बार. The more the conflicts, I think the better a particular series or a movie is. So and we loved it and we're gonna focus part wise. वरुण का ये प्रॉब्लम होगा, राघव का ये इशू होगा ईशा के साथ, एंड ऑब्वियसली दिस टाइम वी गोना इन्वॉल्व ईशा मोर सो दैट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दिखाएंगे ज़्यादा इस बार. एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट वाज ग्रेट. ऑल्सो अबाउट द नेम, सो विंटर स्टोरी जो नाम है वो एक्चुअली केम फ्रॉम द ऑडियंस ओनली, बिकॉज इन द कॉमेंट्स वी यूज्ड टू रीड व्हेन इज द विंटर स्टोरी कमिंग एंड हम लोग ने सोचा यार दैट्स एक्चुअली अ गुड नेम. बिकॉज हम लोग ने ओरिजिनली सोचा था समर स्टोरी सीजन 2, बट when we read कि इतने सारे comments आए कि अब winter story कब आ रही है, so we decided let's name it a winter story. When Shivam introduced the idea of a winter story and his plans of building on the character of Isha, I could not say no for the simple reason that it is such a warm web series and it's my friend's little project and it's my friend's little baby. I couldn't have said no. So and I was so excited to work for this because I am not an actress. I work in the advertising world. I was working at that point of time as well, but that is how the five of us are. We come from different streams, but we loved this series and we wanted to do better for the second season. And when Shivam introduced the idea to me, said okay, I'm building on the character of Isha and are you up for it? My first response was hell yeah. इट वॉज द स्टोरी एंड शिवम की विजन, जैसे वो देख रहा था ये स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी. आई थिंक दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड अस द मोस्ट. और इस बार शिवम ने सब कुछ सोच के रखा था. हमारी वर्क टाइमिंग्स के अराउंड ही शूट हो पाता था. हमने लास्ट सीजन भी ऐसे किया था. आई मीन अ समर स्टोरी के टाइम पे भी हम सेम ही शूट करते थे वीकेंड्स पे बट इस टाइम हमने काफ़ी प्रॉपर प्लानिंग की थी शूट की. अरे ना बोलने के लिए कोई रीज़न ही नहीं था. It was, see, the first season did really well, which really gave us the motivation, and it especially me the motivation कि यार second season तो definitely करना चाहिए because the first one did beyond our expectations. And second thing was character development इस बार और भी था. Storyline में conflicts थे which I love, and so overall it's gonna be a mad season. And considering I was working yeah, Shivam is very he plans things out really well. So
मुझे कभी ऐसा शेड्यूल का प्रॉब्लम नहीं हुआ. ही इज़ लाइक ब्रो तू ऑफिस से आ जा, रेस्ट वेस्ट कर ले आराम से, देन वी विल शूट. और हम लोग वीकेंड में शूट करेंगे जब तुझे कोई काम नहीं होगा. सो एवरीथिंग वाज रियली वेल प्लान्ड. जबकि हमारे पास कोई एडी या वैसा ऐसा पूरा सेट वेट नहीं था. He did a great job in planning the schedules and all of that. So it wasn't a problem for me, despite despite the fact that I was working. It was a very smooth process for me. So yeah. Have five things to say, five fingers on my hand. I can't do much, but baby, I do what I can. सो जैसे कि लास्ट टाइम हमारा प्रोडक्शन थोड़ा कम था, इस बार हमने थोड़ा सा बढ़ाया है. सो लास्ट टाइम हमारे पास कोई मॉनिटर नहीं था जहाँ पे हम प्रीव्यूज़ देखें, बट इस बार so इस बार ये हमारा मॉनिटर है. तो यहाँ पे मैं सारे सीन्स देख सकूँगा. कैमरा यहाँ पर है. यहाँ ईशा यहाँ पे बैठी होगी, राघव यहीं है जहाँ पे अभी है. ठीक है. और राघव के साइड में आएगा वरुण, और उस तरफ नीचे रहेगा अमर. नीचे बैठा रहेगा तू. हाँ मैं नीचे रहूँगा. When everything I own gets burned away, goes up in smoke, I can walk away and laugh about it, treat it like a joke. 'Cause if it's only just the two of us, that's really all I need. Sometimes I can't. Every day was fun, honestly. हर दिन मज़ा आता था. And I think the most fun shoots were the ones जहाँ पे हमें बहुत serious scene shoot करने होते थे. I mean, I remember the fight scene with Samar, Varun and Raghav. That was one of the best shoot days ever. बहुत मज़ा आया उस दिन. So yeah, I think that was fun. ईशा फिर से श्योर. यू श्योर? ठीक है, वही खड़ा है. ठीक है, तू वापस वही खड़ा है. हाँ. तू रिएक्शन मत दे. तू वापस जा वहाँ पे बैठ गया. आई थिंक मैं गिन भी नहीं सकता कि कितनी मेमोरीज हैं मेरी उस लाइक चाहे समर स्टोरी का शूट हो चाहे विंटर स्टोरी का शूट हो. Actually the thing is I love going out. I am just I love to just go out on random places and go to random places and just explore. तो समर स्टोरी और विंटर स्टोरी का यही था कि द सीन्स मतलब आपने बहुत सारे लाइक सीन्स देखे होंगे उसमें, जैसे बैंड्रा वर्ली सीलिंग का हो गया, या समर स्टोरी में आपने देखा कि बॉलीवुड आर्ट्स प्रोजेक्ट का एक मतलब वहाँ पे जो रोड है जहाँ पे सारी ग्राफिटी की गई है वो वाले सीन है. एंड मोस्ट ऑफ द सीन्स आर ऑफ लाइक प्राइम बीच जो वर्सोवा के पास है एंड मरीन ड्राइव ऑफ कोर्स. तो वहाँ पे वी यूज टू कीप ट्रैवलिंग एंड आई यूज टू एंजॉय दैट पार्ट अ लॉट बिकॉज ऑफ कोर्स हम सब में एक्साइटमेंट होता था कि यार हम लोग जा रहे हैं शूट करने के लिए. एंड वी यूज टू गेट अ फील ऑफ द प्लेस एज वेल एंड वी यूज टू मतलब हम लोग बहुत मजे भी करते थे. तो there are lot of sweet memories like when it comes to like shooting on like a winter story and a summer story. ऑडिशन पे जाता हूँ तो लोग नॉट फिट थोड़ी जज कर दो. सॉरी यार तू हमें तो बता सकते हैं, थोड़ी जज कर यार. हमसे किया था, बिंदास बोला था. सिर्फ पैसे की कमी नहीं है. पैसे की कमी नहीं है साहब. क्या कमी है? तो पैसे की बात नहीं है. सिर्फ पैसे की बात नहीं है यार, उसकी दोस्त भी आएंगे और जब ये फाइनली सीरियस हो जाता है तब यार. Rolling. ऐसा देख रहे हैं. एक्शन. हंसते हंसते एक्शन बोला वैसे. थोड़ा और प्लीज. आइडिया हाउस पार्टी यहाँ पे हाउस पार्टी करना. ऐसा यहाँ मेंशन करना. गाइस यहाँ पे हाउस पार्टी. मैं जिया को बोल देता हूँ कि प्लान सडनली बन गया, वो मना भी नहीं करेगी. गाइस हाउस पार्टी गाइस प्लीज गाइस
नहीं यार guys, please. नहीं यार नहीं No means no. no Honestly speaking, I can't single out one good memory from the sets. The set was our home. It was our jaan. It was everything for us. Every moment that we spent over there was a good memory, and the whole shooting process was a very very good memory. Um, I still remember the little bits where we used to like um, get dialogues all wrong, you know. I used to get my dialogues all wrong and then laugh about it for the next 5-6 minutes, and Shivam used to patiently be like, Shubhu, ho jayega, कर ले, एक और बार कर ले शुभू, एक और बार कर ले शुभू. He was so patient and nice, and he was always like, cold coffee बना दूंगा तेरे लिए, तू कर ले बस. So it was all those little moments, and the goofing around and playing around while shooting. It was a very very it's a very fond memory for me, and I honestly wish I could go back to those days. Okay, rolling, guys. Ready? Shubhu, ready? It's okay. Okay, Rachel, ready? Okay, rolling. तुझे बोलना है, एक बार फिर से बता देता हूँ. हाँ. ठीक है guys, ready? हाँ, ready? चल, इसी तरह देख. A lot has changed से बोलना, ठीक है? Rolling, action. A lot is changed. हाँ, ऐसा भी क्या हुआ जो तुझे अरे but I wasn't laughing. I reacted. अरे a lot has changed में मैं थोड़ा बहुत हंसूंगा ना, ऐसा a lot has changed ऐसा उल्टा जाएगा इसमें. It's okay. अभी टाइम है, हम अच्छे से कर रहे हैं. मेकिंग में जाएगा. बस मेकिंग ही बना रहे हैं आज. सब मेकिंग ही हो रहा है. What we made nothing, बस मेकिंग. Okay, rolling, action. यार, okay, continue. Rolling है, हाँ. Oh my god, you क्या पागल हो गई है क्या ये? sorry. Oh, stop. It's stuck in my head. यार one good बोलना will be actually very tough, but one good memory actually काफी थे, so it's gonna be tough, but I think when we were shooting the fight scene between me and Porush, the Raghav and Varun wala fight scene, it was awesome. Considering it was a fight scene, the more serious a scene got, actually the funnier it was for us when we were shooting it. So काफी takes लगे, काफी every बहुत retakes लगे. I couldn't stop laughing, and Shivam was like, यार lighting चाहिए हमको, lighting चला जाएगा. And वो बोल रहा था, वो खुद भी हंस रहा था. Okay, so he couldn't help it either. So but it was a very fun day, and we were looking forward to shoot that scene. हम लोग काफी अच्छे like यार fight scene करना है, fight scene. Today we're going to shoot the fight scene. Today we're going to shoot the fight scene. So very pumped up for that, and so every time I pushed him, I'm like, hey, औकात मेरे and all. I laughed. I was the one who used to crack up every time, and एक बार मैं हंस लिया, नेक्स्ट टाइम अगर मैंने कंट्रोल कर भी लिया तो पौरुष हंस देता था या शिवम हंस देता था. सो इट वाज a fun scene to shoot, like very fun scene to shoot, and it was a tough time for Shivam and Arya considering, but then I'm sure they laughed, so it's not counted. Action. दम से बात करना. अबे ब्रो क्या था? अबे दम से बात करना. अबे देखो बस क्या गया. चलो वापस क्विक रोल. क्यों बताऊं? नहीं बताऊं तुझे. अबे ढंग से बात करना तू. अरे ब्रो एक सेकंड. ब्रो तू आ बैठ. बात नहीं बात कर रही तेरे से. समझ में नहीं आ रहा है क्या? कर. अबे क्या कर रहा है तू? गुस्सा. सॉरी. जो भी प्रॉब्लम है बात उसको अबे उससे निकाल रहा है. पसंद थी ना मुझे. उस वक्त भी तुम दोनों बीच में आए थे, और इस बार भी आ रहे हो. भड़का दो मुझे जिया के खिलाफ. एक और
उस वक्त भी तुम दोनों बीच में आए थे और इस बार भी आ जाओ, भड़का तो मुझे जिया के खिलाओ। भड़का दे ये सूत्र ज्यादा हो रहा है, वरना क्या करने का? अबे यार सुन, तुम लोग क्या लड़ क्यों रहे हो यार? Action. बे ये सुन ज्यादा हो रहा है। अब यार गाइस सुनो, लड़ो मत यार। मेरी गर्लफ्रेंड होना तो आके बात करना, और से हम पे क्या बकवास कर रहा है? यार अबे तू क्या बता रहा है खुद का रिलेशन? अबे सुना बहुत हो गया तेरा, तेरी गर्लफ्रेंड फोटो में जाके बात करना, क्या कर रहे हो यार? तू क्या बता रहा है खुद का रिलेशनशिप को क्या दे रहा है? पीछे चला, पीछे मत चल, यही कर रहा है यार। तू उसकी क्यों सुन रहा है? पागल है क्या? और तू कुछ भी क्यों बकवास कर रहा है? दिमाग खराब हो गया तेरा? हंसी इसको नहीं। है छोड़, अब मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। क्या था? खैर छोड़, मैं जा रही हूँ। हाँ अरे हाँ, सही था। उसको बता देना फिर आई बी लेट। वेयर वाज आई लुकिंग? कैमरे में। सॉरी। It's okay. Action. अरे यार तुम रिंग रिंग। अरे कौन आ रहा है? One good quality of Isha. Okay, so I think Isha as a character is extremely layered. She's not perfect, and she has her flaws and she works through them. It's not like what I really like and appreciate about her is the fact that she feels all emotions, and she sometimes acts on them, but that makes her extremely raw and real, which I really appreciate about her. I, for one, am like that. I feel my emotions and I react immediately, and then I feel it helps me sometimes to get stuff out of my system. And I feel Isha as a character, if not anything, she's a loving character, and she's a raw and a real character with flaws. That is, I think, one of the most real things about her. If I have to talk about a bad quality of Isha's, I think she's sometimes extremely impatient with Raghav, and she has reacted in a very unreasonable manner in the initial stages of the story, at least. I feel there is scope for improvement in her, in the sense that she can be more patient and she can be a little more reasonable at times. She's flawed, but that is what it is. I think there is that scope for improvement for her, where she becomes a little more patient. पिंटू चाचा का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। आई रिमेंबर जब मैं लिख रहा था तो हमने प्लान किया था कि हम किसी उसी एज के कैरेक्टर को कास्ट करेंगे, बट बिकॉज ऑफ बजट कंस्ट्रेंट्स हम वो नहीं कर पा रहे थे। एंड एट द सेम टाइम कार्तिक हमारे साथ रहने आया था बिकॉज उसकी इंटर्नशिप थी मुंबई में 2 महीने की। एंड कार्तिक बचपन से थिएटर करता है, सो मी एंड कार्तिक वी यूज्ड टू डू थिएटर फ्रॉम 8th क्लास। हम लोग साथ में थिएटर करते थे, एंड आई नो हाउ गुड ही इज़ विथ एक्टिंग। सो आई टोल्ड हिम कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, एंड ही अग्रीड, और फाइनली फिर पिंटू चाचा का रोल कार्तिक ने किया। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था वो शूट में, उसका मेकअप करना और वो जो पूरा प्रोसेस होता था ट्रांसफॉर्मेशन, जब वो कार्तिक से पिंटू चाचा बन जाता था, इट वाज अ लॉट ऑफ फन। तो जब भी कार्तिक आता है ना, तो लाइक बोथ ऑफ अस लाइक बॉन्ड एट एन अनदर लेवल। सो लाइक हम लोग वी यूज्ड टू पार्टी अ लॉट। फिर ना कार्तिक का लाइक जो मेकअप होता है तो हम लोग बहुत मजे करते हैं, एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। So I think my overall experience about like Winter Story is like I think maybe it's an adventure. Like I would just say that मतलब मेरे लिए तो it's nothing short of an adventure. Like इतना मैं एक adventure ही कह सकता हूँ, because उसी में I think मैं सारे emotions अपने डाल सकता हूँ। I wish I could go back to that time. Shooting was so much fun. वो कभी ऐसा लगता नहीं था कि हम काम कर रहे हैं, हम बस हर दिन उठते थे और कुछ अलग करते थे, ऐसा लगता था। एंड द आउटडोर शूट्स वर एज मच फन एज द इंडोर शूट्स। तो ऑनेस्टली द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। एंड इवन जब हम बाकी दूसरे एक्टर्स के साथ काम करते थे, जो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनके साथ भी हमारी इतनी अच्छी केमिस्ट्री होती थी। तो
कभी लगता ही नहीं था कि हम काम कर रहे हैं. So we had some really special guest actors coming in the series at different episodes, and they all are very good friends also, whether it's Akash, Nishtha, Tanya, Karthik, Avrati, and they all have done a great job. Okay, rolling हो रहा है. Whenever you are ready, start. There is no action, okay? Like Akash, I know him from college and हमने साथ में short films करी है, and I know that he is a brilliant actor और बहुत बहुत मज़ा आया था उसके साथ काम करने में. आई जस्ट विश कि हमें समर स्टोरी के टाइम थोड़ा और टाइम होता डबिंग करने का, सो उसी की आवाज़ में हम करते, बिकॉज उस टाइम पे वो डबिंग नहीं कर पाया था. एंड बट आई नो हिज पोटेंशियल एंड आई नो ही इज़ रियली गुड एट वॉट ही डज. सो आई एम सुपर प्राउड ऑफ हिम एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू वर्क विथ हिम इन फ्यूचर एज वेल. एक्शन. लोग कहते हैं मुंबई में स्टार्स हर जगह दिखते हैं, और देखो मुझे मेरा फेवरेट सेकंड वीक में ही दिख गया. टॉकिंग अबाउट निष्ठा, वो भी मेरे कॉलेज से ही है एंड वी हैव वर्क टुगेदर बिफोर फॉर अ शॉर्ट फिल्म एंड शी इज़ सच अ गुड एक्ट्रेस. शी इज़ so sweet and I'm really looking forward for, you know, something for her like in the series in future, and I'm very excited for that part of her in, you know, the coming things. Cheers. Talking about Avrati, who's playing Shreya in the series, she is my school friend. She is like, I know her from childhood, and you know, after a very long time we had a reunion in Mumbai, and we met at the very right time because that was the time when I was looking for someone to play Shreya, and I told her about the entire idea and she agreed, and we had so much fun. She's such a nice person, such a good friend, and she's playing Shreya, so she's very very special. अच्छा काम करते हैं विदाउट कैमरा एक बार ट्राई तू करते चल. हाँ. रिहर्सल यार चल. Yeah, start. Raghav. Then we had Tanya who played Jia. I mean, first of all, thanks to her for playing such a role, because it's very difficult to find people to, you know, play a negative type of a role, and she did it very beautifully and I'm very happy. She is actually Arya's friend and Arya recommended her, so that's how it happened. आओ गेट खोलो, अभी चल रहा है सैंपल है. सैंपल है यार. And then Karthik. So Karthik and I are also school friends. We know each other from like childhood, and we have done theatre together. And there were times when वो डायरेक्ट करता था कुछ प्लेज और मैं उसमें एज एन एक्टर काम करता था. तो अभी वेब सीरीज़ में वो रोल्स रिवर्स हो गए थे. He was the actor and I was directing. Karthik, you know, like he's an amazing actor. If I have to talk about the whole experience on the sets of A Winter Story, it was nothing but extremely pleasant, warm, loving, because I stayed with my friends in my home and I shot for a beautiful web series which is talking about friendship, love, and human emotions. So it used to be I was working at that point of time. Sometimes I used to be really tired when I came home, but I came back home to such a loving family, like a family of friends who used to make me feel good in like an hour or so, and then used to feel ki theek hai chalo, let's get this scene done today, let's get that scene done today. It was nice, the whole experience. It was a detox experience for me after I came back from a hard day at work. It was we used to go around places and shoot, have fun. The whole experience was to just have fun. It didn't feel like I'm shooting, I'm doing something like, you know, enormous. I just used to be around my friends and be myself and just shoot. It was as simple as that, and it made the whole experience like a joy. It was a joyful experience. I think jitna bhi bolu, it's very less, but I will try to make it short. It was amazing. I have never done anything like this before in my life, series and all, but considering the fact that we were already like best friends, like it was very easy for us. You know,
the entire process was very easy because we already knew each other personally, and so that flexibility, that level of comfort, it was just spot on, you know, and everything was like tailor made tha hamare liye. So the communication process was it was smooth, and that was one aspect I'm talking about. But when it came to the whole shooting experience, it was amazing. Like, we weren't confined to just shooting घर पे, हम लोग बाहर जाते थे घूमने के लिए. कभी शिवम बोलता था कि यार तो टुडे आज हमको तेरा और ईशा का we have to shoot the, you know, whole खाने वाला sequence, so we have to go out to eat. And then हम so we used to shoot and eat and hang out, 3-4 चीज़ें और घूम के आते थे. So it was like मतलब a vacation, you know, the entire shooting, apart from the part where I was working. Every time we shot, we used to go out, जुहू घूम के आते थे, बैंड्रा घूम के आते थे, या ये रेस्टोरेंट जाते थे, वो रेस्टोरेंट जाते थे, you know. So in the process we were enjoying. It was a very, you know, natural process. That was again one aspect of it. And lastly speaking, the Goa thing, it was, I think that just like killed it. वो वाला part, the way Shivam had planned and all, it was surreal. And I think that was the most iconic part about the entire series, even which we didn't know until the last 2 months, last 1 month actually. वहाँ जाके पता चला हम ओके ये शूट करेंगे. So I think it was awesome, man. So I thank Shivam, and I thank Shubharma, Paurush, Arya for giving me this experience, and I had an amazing time shooting with them, and I don't think I would have such an experience again. Paurush is someone who I know from the longest among all the cast members, and that's why I know how stupid he is, but at the same time I know how amazing he is, whether as a person or as an actor. And मुझे मालूम था, like I can just like make him act because we have worked in so many projects. He is as stupid as Varun, but he is as amazing as Varun also. So I think yeah, he did a great job, and I'm really thankful to Paurush for being a part of this project, and can't wait to see Varun becoming a really successful actor very soon. How is Shivam as a director? I think मैं simply put that he is very passionate. He is very, very passionate about his work, and he is very creative. Actually, you know, अगर मैं उसको बोलूँ that I think if I have to describe him, I'll just say that he's an all-rounder. Like, he's a writer, he's a cameraman, he's a director, he's an actor. Like he's like let's just say like he's like Horlicks, पता है, you know, like 3 की शक्ति. Like मैं तो इतना ही, like I would just say like that only. And my experience working with him was like really good, because I think he is one of those people जो ना actually मेरे से acting करवा सकते हैं. Maybe he knows, you know, he knows the chords. He knows कि like mentally इसको कैसे मैं touch करूँ कि इसका ऐसा emotion बाहर आ जाए. And मतलब मैं इसको ऐसे क्या बोलूँ कि, you know, वो smile करे, and you know he knows me like inside out. Like maybe I think that's what, like we have a really good, you know, actor and director bonding. अगर मैं बस इतना बता सकता हूँ, अगर शिवम को अभी गुस्सा आता है ना, तो अगर उसको like अगर आज के टाइम में अगर उसका गुस्सा बढ़ गया, तो आई वुड से कि वो मेरी वजह से है. बिकॉज आई थिंक मैंने उसकी जितनी पेशेंस मैंने उसको उसकी टेस्ट की है, जितना मैंने उसका टेम्पर बढ़ाया हुआ है, लाइक आई थिंक सेट में किसी ने भी उतना नहीं किया होगा. मैंने जितना उसको परेशान किया, लाइक मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा. Shubharma is a very, very good friend of mine, and she's like a sister to me. Like, not like, she is actually a sister to me. Like, she ties me Rakhi every year. So she keeps saying that she is not a professional actress, but I know she can act better than a lot of professional actresses, because she's very good at it. She's very good at learning new things. I mean, she used to show that dedication. I could see that every time we used to shoot. I mean, there were times where she used to be really tired, but still, you know, like we somehow used to manage to shoot. And she's a brilliant actress. Like, बहुत अच्छी acting करती है वो. And I'm so thankful to her for being a part of this series, and especially for Winter Story, when she had to really, really give a lot of her time. And thanks to her for being Isha. And I'll tell you something, that Isha
even though Isha's character is so much complicated, but all the good things about Isha, all the good things, all the sweet things about Isha are actually, you know, inspired from Shubhrema's real self, you know. And I think that's what Shubhrema is. She's very sweet and she's very loyal. Again, I'm so thankful to her for being Isha and for making this series possible. Shivam, if I have to talk about him as a director, Shivam is one of my closest friends. He is an extremely warm, generous, a giving person, and having a friend like that as a director makes it such an easy ride if you're not an actress. Like, I am not an actress. He made me feel extremely comfortable. He was my friend. He used to be like, Chal Shubhu, ye kar le aaj. Like, ho jayega. Nothing. Just say this, no? Like this. Okay, done. Ho gaya. But he also used to, you know, push us to do better. He used to be like, ek aur baar le le ye shot. You can do better. We can do it better. So, and he also used to send me coffee whenever I was feeling low, or if I wanted some boost right before the shoot. So it was damn nice with Shivam. It was an easy experience, a very smooth experience, and he's a very thorough person. He knows what he wants and he chalks them out, and he does it in a very systematic manner. So it makes the whole procedure easier that way. Rohit and I are like amazing friends. I cannot be like more thankful because he even after being, you know, having such a hectic schedule of his work, he gave so much time to the series and made it possible, and I'm so proud of him because he's a brilliant actor, and as an artist he is very sincere. I mean, I should definitely say this because we see the funny side of him on social media and we see the actor side of him in the web series, and you know that, you know, he can be funny and everything, but he is very sincere when it comes to work because you know, right before the shot he might be, you know, laughing and everything, but as soon as I used to say action, he used to really get into the character. And I remember telling him this in season 1 itself, and I think it was like very first few days of us shooting, and I told him that, you know, you're very sincere and you are very, very good as an artist, which I'm really proud of, and I'm so thankful to him for saying yes to this series and making it possible. Shivam as a director, he's phenomenal. Not only as an actor, but as a director, he's phenomenal. You know, this is one thing that is very important, is attention to detail, and that it comes to him very naturally, and not everyone has that, to be honest. He's very planned. He is professional. He knows when to do what. He's not confused. He's sure of what he wants, and he also knows how to get that out of you. काफ़ी सारे लोग होते हैं कि यार, you know, ये शॉट चलेगा हम यूज़ कर लेंगे टाइप, बट देन लाइक he knows if he has a vision of a particular scene, he will make sure that he gets it out of you. Okay, like no matter how many takes it takes, or like no matter how, you know, situation is tough, वो manage कर लेता है, and that is very important. He's young, and इस एज में him being so professional and very to the point about everything, it's really awesome, and I'm glad to see that. And another aspect is the fact that, you know, छोटे छोटे चीज़ें, like, you know, before shooting a scene सबके फ़ोन में मैसेज आ जाएगा कि यार ये सीन है, स्क्रिप्ट आ जाएगा. So he's like, guys 15-20 मिनट है, याद कर लो यार. एंड बड़ा सीन होगा तो काफ़ी पहले भेज देगा कि आज शाम को करने वाले हैं, सो तुम लोग याद कर लो, टेक योर टाइम. सो ही नोज़ हाउ टू मेक यू फील कंफर्टेबल. ही नोज़ कि ही इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. आज दूसरा सीन शूट कर लूँगा मैं. सो नॉट एवरी वन इज़ लाइक दैट अगेन, एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप. दिस इज़ एन एक्सपीरियंस that we all, the entire cast, has been through since the past like 4 years of us living together. And he's not only a great director or a great actor, he's an amazing friend, and I'm very glad that I worked with him, and I hope to work with him in the future. Definitely, I want to. Now talking about Arya is Rachel is Arya is Rachel, and I'm so thankful to her because
she is the one who kept us, all of us, motivated to make this series because firstly she agreed to play Rachel, and then throughout the series, along with being Rachel, she had to be the cinematographer. A lot of times she used to help me with direction, and overall she's so sincere, so good, so beautiful, and so passionate about work, so passionate about filmmaking, and she is really someone who made this series possible, and I'm super thankful to her. And Rachel is the best. The best. वो इतना passionate है and he's a lot like Summer in a lot of ways. वो हर चीज़ का ध्यान रखता था वो. ही as a director he was the best. जब भी उसको लगता था कि आज का दिन थोड़ा लंबा जाएगा शूट वाइज, he used to make it so comfortable for us, ऐसा वो हमें फील नहीं होने देता था कि आज जल्दी करना है, आज ज़्यादा शूट है, वैसा कुछ. बहुत कंफर्टेबल, बहुत होमली है वो एज अ डायरेक्टर. he understands your perspective and he puts across his also very well. So, and he knows how to handle a crew. He's just a very people person that way. तो बहुत अच्छा है वो एज अ डायरेक्टर. एंड स्पेशली जब पैंडमिक हिट हुआ था, द वे ही यूज्ड टू इंटरैक्ट विद अस, जैसे वो शूट्स हम जो घर पे करते थे शूट्स, वो कैसे हैंडल करता था. आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट. आई मीन इफ एनीवन कुड हैव पुल्ड द सीरीज ऑफ इट इज हिम, नो वन एल्स. स्पेशली लास्ट ईयर के बाद तो द बेस्ट. वैनिटी वन का है मेरा, तब से वेट कर रहा हूँ. टचअप करना है मेरे को. सर अभी वो मेकअप आर्टिस्ट बिजी है सर. क्या बिजी यार, रोशन वाले को बोला यार. आई वांट टू टॉक टू द मैनेजर. If you want to hack the sky, you just need to fly high. It will be cold for a while, but at the end of time, I will be on your side. Whoa. Please don't go too far. Whoa. Please don't go too far. If you want to travel miles, pack your dreams and thrive outside. I will be here for advice while you get into the wild. Whoa, please don't go too far. Whoa, please don't go too far. To leave this world and just leave my heart alone in the dark. I remember we used to smile, but please don't go too far. One of the most important things for a film or a series is music. So मेरे दिमाग में ऑलरेडी कई सारे प्लान थे कि कहाँ पे क्या चीज़ में म्यूज़िक की ज़रूरत है, कहाँ पे गाने की ज़रूरत है. एंड एक ऐसा टाइम आया व्हेन आई थॉट कि व्हाट वी शुड हैव अ ओरिजिनल थीम सॉन्ग, लाइक अ सॉन्ग विच इज़ फॉर द सीरीज़. लाइक वो एक एवरी टाइम यू थिंक अबाउट अ समर स्टोरी यू विल थिंक अबाउट दैट सॉन्ग. तो एक ऐसा गाना होना चाहिए. एंड आई कॉन्टैक्टेड माई फेवरेट अविरल. सो अविरल और मैंने उसके पहले हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी थ्रू द रेनबो. सो उसके लिए अविरल ने एक सॉन्ग बनाया था यारा रे, विच इज़
विच इज़ लाइक अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. आप सुनना अगर यूट्यूब हमारे सेम चैनल पे डाला है डेयरिंग वंस पे. सो आई कॉल्ड अविरल और मैंने उसको एक पूरा सिनेरियो समझाया कि क्या है ये सीरीज़ और क्या आइडिया है हमारा और किस टाइप का सॉन्ग होना चाहिए, क्या वाइब्स होने चाहिए उस सॉन्ग के. एंड आई थिंक अ वीक लेटर ही सेंट मी अ सैम्पल और मैंने वो सबको सुनाया एंड वी ऑल लव्ड इट एंड वी वर लाइक यस, गुमशुदा इट इज़. सो यस, बिग शाउट आउट टू अविरल फॉर क्रिएटिंग मैजिक ऑलवेज. तो जब मैं विंटर स्टोरी लिख रहा था तभी मेरे दिमाग में कुछ ट्रैक्स थे जो मैं यूज़ करना चाहता था, विच आई न्यू दैट इट विल फिट परफेक्टली. All the artists that I approached, I asked for collaboration, they accepted the offer and it rocked. Each and every song which we have used, really उसने उस पूरे scene को बहुत ज़्यादा better बना दिया उस music ने. And I'm really thankful to all of them, whether it's Derek, Abhishrut, Augustine, Vasu Raina, Shrini, Shazzy, Rishi, Nilesh, all of their tracks, I think उन गानों की वजह से ही वो episodes इतने अच्छे लगते हैं जितने लगते हैं. एंड आई रिमेंबर अविरल, व्हेन आई टोल्ड अविरल कि हम सीज़न 2 प्लान कर रहे हैं एंड आई टोल्ड हिम कि ऐसा ऐसा है, ही टोल्ड मी कि ब्रो एक नया वर्जन बनाएंगे गुमशुदा का. एंड ही किल्ड इट, ही मेड इट सो गुड. एंड ही, दीपांशी, अर्जित, भव्य, they all collaborated, they made a really good version of Gumshuda. I loved it. Even the 2.0 version which is like the EDM version, वो भी बहुत ज़्यादा. I remember हम लोग जब शूट करते थे, हम लोग बीच में जब भी ब्रेक लेते थे, हम we used to randomly play Gumshuda. And even when we were traveling to places like हम लोग let's say beach जा रहे हैं, so in Ola हम लोग वो Gumshuda play करते थे. It was like our song playing during when we are actually living the moment. So वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता था. जब मैं सारी लोकेशंस के बारे में सोच रहा था, and that is when I thought कि हम अपने कॉलेज जाके शूट कर सकते हैं, बिकॉज आई नो कि बहुत सारी लोकेशंस वहीं पे कवर हो जाएगी. प्लस इन विंटर स्टोरी आई वांटेड टू शो एक ग्लिम्स ऑफ राघव और ईशा की स्टोरी का जो पास्ट था, एकदम फ्लैशबैक, जो कॉलेज टाइम के मेमोरीज, तो वो भी वहाँ पे शूट हो जाएगा. सो हम लोगों ने एक दिन का प्लान किया शूट और हम लोग गए अपने कॉलेज वापस. एंड थैंक्स टू एवरीवन in our college for being so supportive. हमारी सारी टीचर्स, सारे फ्रेंड्स, फुल डे सब ने हमारी बहुत सारी हेल्प करी. एंड इट वाज लाइक बहुत इजीली हम लोगों ने इतने सारे सीन वहाँ पे शूट कर लिए. द बेस्ट मेमोरी आई वुड से इज व्हेन जब हम लोग कॉलेज गए थे, व्हेन वी वेंट टू कॉलेज, लाइक वी ऑलरेडी लाइक ग्रेजुएटेड, लाइक हम लोग ग्रेजुएट कर चुके थे 2018 में, हम फेब में गए थे 2020. एंड इट वाज अ वेरी नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस, इट वाज अ वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मतलब कॉलेज यार, मतलब ग्रेजुएशन हो गया एंड लाइक कॉलेज वापस जाके वो पुरानी यादें ताज़ा करना. सो लाइक दैट वाज अ वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस. एंड आई थिंक दैट लाइक visiting college, like meeting my old friends who are still there in college, like I think that's the most like sweetest memory I have of the shoot. उसके अलावा एक और मेमोरी जो मैं शेयर करना चाहूँगा फ्रॉम अ विंटर स्टोरी, वो ये थी कि एक दिन मैं, पौरुष और आर्या, हम तीनों गए थे मरीन ड्राइव एंड वी हैड टू शूट फ्यू सीन्स. उनमें से एक फर्स्ट एपिसोड का ही था जिसमें वरुण और समर मरीन ड्राइव पे बैठ के बातें कर रहे हैं. उसके अलावा कुछ आगे वाले एपिसोड्स के जब वरुण का कैरेक्टर बैठा हुआ मरीन ड्राइव पे एंड सो ऑन. सो जितने भी हमारे उधर के शूट थे वो हमें करने थे. एंड उसी दिन हम लोगों ने ऑलरेडी 2-3 जगह और जाके शूट करके हम वापस वहाँ आ रहे थे. सो हम लोग काफ़ी टायर्ड थे एंड इट वॉज अराउंड 2 PM. बहुत धूप थी, हम लोग बहुत थक गए थे. आई थिंक शॉट वैसा आ नहीं रहा था जैसा हमें चाहिए था एंड हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होके बैठ गए थे वहाँ पे मरीन ड्राइव पे ही, ऐसे अपने आप को लाइक ऐसे टी-शर्ट से छाव लेकर, ताकि धूप ना लगे ज़्यादा. और तभी 2 लोग आए हमारे पास और उन्होंने बोला कि हे, हम लोग ने आपकी वेब सीरीज़ देखी है, वी रियली लव्ड इट. एंड उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया एंड दैट रियली गेव अस लाइक इंस्टेंट मोटिवेशन मिला हमें. जैसे ही वो लोग वहाँ से गए, हमने पूरा एपिसोड शूट करा, सब कुछ जितना हमारा शूट मरीन ड्राइव का था सब फुल एंथुजियाज्म के साथ शूट किया. दैट डे वाज रियली स्पेशल, आई ऑलवेज रिमेंबर इट. सो फाइनली फरवरी 2020 आया और हम लोग का 50% शूट हो चुका था. एंड देन वी हैड टू शूट अ सीक्वेंस ऑफ ठहर जा सॉन्ग. और उस टाइम पे वो सॉन्ग रेडी नहीं था, बट आई न्यू व्हाट वी हैड टू शूट. एंड ऑल्सो हमें पाँचों को उन फ्रेम्स में दिखना था, लाइक फ्रेम में इवन जो बीच वाले शॉट्स थे जो एंड में आते हैं, जहाँ पे हम सब बीच पे जाके खड़े हो रहे हैं और कैमरा हमारे राउंड घूम रहा है, वो सारे शॉट्स हमें लेने थे. तो वी रियली नीडेड समवन्स हेल्प. सो दैट्स व्हेन आई कॉल्ड शुश्रुत.
शुश्रुत एंड आई हैव वर्कड फॉर शॉर्ट फिल्म्स इन कॉलेज, तो मैंने शुश्रुत को बुलाया कि ब्रो हम पाँचों को फ्रेम में रहना है, सो आई नीड योर हेल्प। नेक्स्ट डे शुश्रुत आ गया था, हम लोगों ने पूरा ठहर जा वाला सीक्वेंस शूट करा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग बीच गए एंड वहाँ पे हम लोग DJI से शूट कर रहे थे, जहाँ पे वो पूरा शॉट था, हम पाँचों खड़े हैं बीच के पास। एंड तभी DJI के अंदर पानी चला गया एंड सम शॉर्ट सर्किट हैपेंड एंड उसी टाइम DJI बंद हो गया और उसके बाद कभी चालू नहीं हुआ। लाइक हमारा कैमरा वहीं ऑन द स्पॉट खराब हो गया एंड इट वाज सो सैड। लाइक आई रिमेंबर जस्ट बिफोर दैट शॉट हम लोगों ने लास्ट शॉट देखा था एंड वी वर लाइक दिस इज द बेस्ट शॉट, लेकिन एक टेक और ले लेते हैं जस्ट यू नो फॉर जस्ट टू बी सेफ। और हम लोगों ने वो एक शॉट और लिया एंड द कैमरा वाज गॉन एंड इट वाज वेरी सैड। हम लोग बहुत सैड हो गए थे एंड वी थॉट लेट्स सी विल फिगर आउट सम अदर वे, बिकॉज उसके बाद काफ़ी शूट बचा था। एंड देन कट टू मार्च, लाइक हमारा शूट थोड़ा सा हॉल्ट पे था बिकॉज ऑल द आउटडोर शूट्स जो थे हमारे, उसके लिए हम वेट कर रहे थे। एंड उसी टाइम लास्ट वीक जो फरवरी का था, तब हमें कॉलेज में हमारे कॉलेज में फेस्ट था और हमें इनवाइट किया गया था कि यू गाइस कम एंड शो अस द टीजर ऑफ योर वेब सीरीज। सो वी वेंट एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन। Like there was some complications before the screening of the teaser, but during the screening it was so much fun. I hope you all enjoyed the teaser. So. सो विंटर स्टोरी का टीज़र एक्सक्लूसिवली पूरे कॉलेज के सामने स्क्रीन हुआ एंड एवरीवन अप्रिशिएटेड इट, तो हमें बहुत मज़ा आया था, हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिला। हमने कुछ शॉट्स वहाँ पे भी लिए थे ड्यूरिंग द फेस्ट। उसके बाद मार्च आ गया एंड मार्च में हम लोगों ने प्लान आउट किया कि कैसे हम ड्यूरिंग द एंटायर मंथ हम शूट करेंगे बाकी का बचा हुआ, बिकॉज DJI अभी तक ठीक नहीं हुआ था और हम लोग को शूट पूरा करना था। सो लेट्स टॉक अबाउट 2020। 2020 इज द ईयर जिसने हमारी जिंदगी को ही नहीं, आई थिंक पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है। ओ यार, ये क्वेश्चन तो सोच के ओनली आई एम गेटिंग अ बीटी। आई एम सॉरी बट वी वेंट थ्रू इन दैट वन, लाइक द वन अनएक्सपेक्टेड ईयर वाज, इट्स अनफैथमेबल। एंड आई रिमेंबर द लास्ट टाइम वी वेंट आउट वाज 7th मार्च। उस दिन हम लोग बाहर गए थे टू हैव लंच एंड एवरीथिंग एंड हम लोगों ने कुछ शॉट्स मोबाइल से शूट किए थे and then we were planning ki how we are gonna finish the shoot. So we started shooting whatever was left, जो घर के shots थे, because that we can shoot with the camera or DSLR. So हम लोग वो सब shoot कर रहे थे and then one day we got the news that you know this COVID is increasing really seriously और हो सकता है कि you know हमारे area में भी आ सकता है and we should you know just take a break and go home. So I remember 23rd March 2020, we were all just chilling, we were you know like playing and all, and suddenly हमें news आई कि हमारे area में भी you know COVID आ रहा है and everything, and it's all getting very serious. हमारे parents, everyone was getting very worried. So हम लोगों ने decide किया let's go home tomorrow. So we all booked our tickets. Next day we were all going home. 24th March in the morning we all left for our homes. Okay, हम सब अपने अपने घर चले गए। हमारे पेरेंट्स भी काफ़ी वरिड थे एंड दे वांटेड अस टू कम बैक होम। तब तो हम सबको फिर घर वापस जाना पड़ा। सबको लगा था कि सब जल्दी ठीक हो जाएगा और फिर हम वापस शूट स्टार्ट कर देंगे, पर एक के बाद एक महीना निकल गया। हम मुंबई में थे नहीं, लेकिन फिर भी हम रेंट हर महीने दे रहे थे क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि वो घर छोड़े। बट बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल रीजंस हमको वो डिसीजन लेना पड़ा। Decision to leave that house. हमको अपना सारा सामान निकालना पड़ा एंड लाइक उससे आई थिंक सबसे ज़्यादा जो लाइक दुख जिसको हुआ है वो शिवम को हुआ था, बिकॉज वो उस घर को लिटरली आई थिंक दैट होम वाज हिज हार्ट। like his that home was much closer to him than to I think any of us. क्वेश्चन ये था कि हम शूट पूरा कैसे करेंगे, तो क्या हम सब पोस्टपोन कर देंगे? पर हम ऑलरेडी बहुत पोस्टपोन कर चुके थे। क्या सीजन कैंसिल कर देंगे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। We were really losing hope. फिर
फिर एक दिन शिवम ने कॉल किया और कहा कि हम बनाएंगे ये सीज़न चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कुछ चेंजेस किए स्टोरी में। हमें लगा था कि हमें स्टोरी में कुछ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, बट वो एक्चुअली में और ग्रैंड स्टोरी बन गई। मुझे मालूम था कि वो कुछ ना कुछ आइडिया तो निकाल ही लेगा। शिवम वाज लाइक यार नहीं यार फेस करना है। We didn't think that we would be able to like finish the series. Shivam didn't give up hope. He was like, kuch na kuch karke we'll be able to get it done, don't worry. We used to be on calls. We had to record avoiding noise and then sending it to him. वो sync करता था, कभी match नहीं होता था, so we had to do it again. The trust factor in the series and him as a director and in us as an actor is what that got us through. So by the time it was December 2020, I realized कि यार it's taking a very very long time and we have to do something now. So I thought, you know what, I'll make some changes in the script and I'll start editing, and in February we will go to Goa and we will finish our rest of the shoot. And बाकी के story को एक ऐसा stitch करने के लिए I have planned an alternative story, which was the Himachal part and everything. Check the mic and make sure it sound right, boys. When I started writing आगे का, I realized that कि एक point आएगा जब हमें कहीं पे मिलना होगा और बाकी का shoot complete करना होगा. Then finally it was time for us to go to Goa. Finally, I am boarding. Super happy. I don't think you can hear me. I'll have the cottage cheese slider. Missing someone with all your missing someone with how much you miss it, and you deserve. So after the breakfast, we had a plan of going out. So it was still early in the morning and we really wanted to leave early because we had a plan that we were gonna walk around the entire Panjim. And the reason is that we were actually going to shoot for a winter story. Okay, so Shubhu is almost here, Shubhurima, and I'm gonna go downstairs and surprise her because she has no idea that I'm here because I was supposed to come at 6 p.m. today. I know, you take shower first. I'm so happy to be here. It's like Evershine Millennium Paradise.
This is such a wo na that 2 years ago today we thought about making. I this remember Yeah, the no. way he came to the room and he said there will be 3 guys. I remember in Goa, Shivam had this thing. He was like, guys, enjoy yourselves and we'll also shoot. So both were going parallelly for us. Like we were not just concentrating on shooting, we were also concentrating fully in enjoying ourselves. So after our breakfast, we were going to leave for our shoot. We were going to shoot at multiple places in North Goa. So we booked a cab for the entire day. As we had to go to multiple places and we were going to shoot, and shooting takes a lot of time. It's there. Yes. That side. Guys, all 3 of you turn once. Yeah. अरे यार ये हमेशा लेट है लाइफ में. एक और यार बाल बांध दिया. फिर से मतलब क्या प्रॉब्लम है इसको? It's like a 200 meters walk through Same. towards the Chapora, and that is that Maggie shop where Amir Khan also had a Maggie. A guy also told me. और मैं सोच रहा था एवरेज जाऊंगा. Let's shift away from this world of madness. Take a little time to enjoy the silence. So finally, guys, we are here. So this is it, guys. This is Chapora Fort. How do you feel, Rohit? Is it as you expected? Is that good as you expected? This is amazing. Fantastic. Mind blowing. Wow. No, You can't believe? No. Why? who would have thought? ये तो ये क्या है मतलब? Rohit, can you believe? Bro, no, because it's my first time in Goa. Can you believe it? Damn. This is Arya, my first time. can you believe? I am living a dream. And me, guys. I'm already crying. Mad. अरे मेरा बाल तो दिखा, look bald. यार यहाँ तक काट दिया, है ही नहीं क्या इसके ऊपर? Think of a place where there's only brightness. Take me by the hand and we'll try to find it. Time stands still as we lie and daydream. It feels so real, can you see what I see? Let's shift away from this world of madness. Take a little time to enjoy the silence. Feel the wind as it touches your lips. Feel the sun as you close your eyelids. Think of a place where there's only brightness. Take me by the hand and we'll try to find it. Time stands still as we lie and daydream. It feels so real, can you see what I see? It was one of the most exciting times in the last 1 year, honestly. And the moment we met, हम लोग सब भूल गए थे, एक साल क्या हुआ. Then हर दिन explore करना और shoot करना. It was a whole lot of fun. Like पूरा process और भी better हो गया. And because a lot of the things that we show in the series is related to us in some way.
तो वो जब हम शूट भी कर रहे थे तो वो एक्सपीरियंस हमारे साथ रियल में हो रहा था, तो फिर से वो लग नहीं रहा था कि हम शूट कर रहे हैं, बस कैमरा रहता था साथ में और जो हम फील कर रहे हैं उस टाइम पे, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं गोवा आके इतने टाइम बाद, वही सब बस हम स्क्रीन पे लाए. So it was too much fun. So the next place is a cafe. Like, it's not a usual cafe. This place has a totally different ambience. That's what we saw on internet. Arya found it and we are really excited to go there and see how it is in real. So after following the map, we finally got to this place in Arambol and it took us like a minute to figure out where exactly that cafe is. But as we were walking towards this cafe, we had no idea that this place will become one of our favorites in Goa. I wanna see the sunset over the ocean, feel warm sand between my toes, and have my heart stolen by a beautiful girl. I wanna kick back, relax and watch all the clouds skate beneath the stars and hear the waves crash to the beat of her heart. The entrance itself was very unique. As we were walking towards the cafe, we were already getting the vibes that this place was going to be really unique and really one of its kind, and it was more than what we expected. Beat of her heart. There's no one else around but her and me. There's nowhere on this earth I'd rather be. Sing it with me. I never wanna leave this place. Wanna call it home. I'm gonna call it home. Maybe these will be those better days, and they feel like home. Yeah, you feel like home. She lets her head down when the wind blows her hair all around me. She knows I surrender to the way she glows, and I can't stop thinking about just how perfect this all turned out. No other word. So after this, we had to go to Parra Road to shoot some scenes for our web series, and also Porush reached the hotel and we told him to come directly to Parra Road so we can leave together for dinner. Up on the mountain, friendly breezes kiss your face. And up on the mountain, you can see every place. Up on the mountain, well, you feel so warm and safe. But down in the valley, you find grace. Up on the mountain, you can see the eagles flying. Up on the mountain, you don't feel like you've been trying. Up on the mountain, you can feel the sun's embrace. But down in the valley, you find grace. Down in the valley, that's where you get your scars. Down in the valley, you find out. Down in the valley, you find peace. Down in the valley, that's where you get your scars. Down in the valley, you find out just who you are. Down in the valley, friend, that's where you run your race.
Down in the valley you find grace. Down in the valley you find grace. The Goa scenes, like all of us going to Goa, that was nothing short of a dream. I like whenever I just sit back and मैं अभी भी सोचता हूँ ना गोवा के बारे में, I always, you know, I miss that place, I miss that vibe, and I always like I miss my friends, because हम लोग वहाँ पे जाके जो मस्ती हम लोगों ने की और जो शूट हमने वहाँ पे किया है, I think it'll be one of the most sweetest memory that I'll cherish like for the rest of my life. So yeah, that's how we made it possible. I mean, sometimes we get thoughts like, what if nobody will watch it? Is it really worth it? But I believe that if you want to do something, just do it. Just give your best. Baki dekha jayega. If you ask me what made this series possible, I'll tell you that these guys, each and everyone who was involved in this series, they made it possible, because I can never imagine making something like this, you know, with zero budget and, you know, like something just like making something, you know, it's not possible without finding right people who work hard equally with you to make something like this. So I'm really blessed that I have such people, that these people, you know, give their 100% to make something like this. And that is why I really pray that our story will reach more and more people very soon, and people will fall in love with this story very soon. You were lost in the city when I finally came. You were standing with strangers when I called your name, and I called to your heart just as loud as a train. 'Cause whenever you're lonely, well, I feel the same. And I've loved you forever, and it's hard to explain. Long before Cain and Abel, when God made the rain, yes, I've loved you forever. From the moment time began, when my soul roamed the earth, from the sea to the land, girl, I've loved you forever. Both wild and tame, with a love old and ancient, and so unashamed. You were alone in the crowd, my saving grace, when our lips came together, and I held your face. And I called to your heart in a voice loud and plain. 'Cause whenever you're hurting, well, I feel the pain. And I've loved you forever, and it's hard to explain. Long before Cain and Abel, when God made the rain, yes, I've loved you forever. From the moment time began, when my soul roamed the earth, from the sea to the land, girl, I've loved you forever. Both wild and tame, with a love old and ancient, so unashamed. And when the phone doesn't ring, I guess the lines must be down, and the mailman ain't stopped in this little town. And the Pony Express, all the horses came up lame. When I don't hear from you, they're all to blame. Yes, I've loved you forever, and it's hard to explain.
long before Cain and Abel. God made the rain. Yes, I've loved you forever, from the moment time began, when my soul roamed the earth, from the sea to the land. Girl, I've loved you forever, both wild and tame, with a love